कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Well, first of all, I'm not sure how many are asking. I know the mega crowd is. The right-wing Republicans are, talking about we can't do this. You find ourselves in a situation where the cost of walking away could be considerably higher than the cost of helping Ukraine maintain its independence. We know the Germans are now sending tanks in after the U.S. said it would send Abrams tanks as well. But we know President Zelensky continues to say what he really needs are F-16s. Will you send F-16s? Look, we're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now that we're sending him to put him in a position to be able to make gains this spring and this summer going into the fall. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. And in news still to come, BJP and AAP file FIRs after violent fight on the floor of MCD House. Vadra Congress continues with abuse politics, now wishes for Prime Minister's death. पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है? भगवान Mr. 1, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है।
पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? Some international news now. The death toll in the devastating quake that struck southern Turkey and neighboring Syria on the 6th of February has now crossed the 50,000 mark, while Turkey's Disaster and Emergency Management Authority reported 44,218 deaths on Friday night. Syria announced the death toll of 5,914, taking the combined toll in the two countries to above 50,000. Pentagon Press Secretary U.S. Brigadier General Pat Ryder has said the United States and India enjoy a good partnership, and the U.S. is looking forward to continuing to develop its relationship with the Indian military. And coming up in other news, the BJP and AAP file FIRs after the violent fight on the floor of MCD House in the national capital. Yogi comes down hard on the SP over Mafia Raj as a face-off erupts over the recent Prayagraj murder in broad daylight. खालिस्तानी सरकार है पंजाब में क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you've got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you?
सरकार है भगवान। Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान। Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Viewers, we're live and breaking this Saturday afternoon. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest on India's #1 news channel, Republic TV. Let's have a quick look at the headlines. A day after a violent face-off in MCD House, BJP releases videos claiming Aam Aadmi Party incited violence. Vadra Congress continues with abuse politics, now wishes for the Prime Minister's death. AIMIM opposes name change of Aurangabad to Sambhaji Nagar, calls it communal. Yogi calms down hard on SP over mafia. Raj's face-off erupts over Prayagraj murder. German Chancellor on two-day India visit, bilateral talks underway at Hyderabad House. RRR wins 4 trophies at HCA Film Awards, including Best International Film. Viewers, let's go straight to the top story we're tracking right now. 3 DRG officials were killed during the encounter between security forces and Naxals in district Sukma. Deceased include ASI Ramuram Nag, Assistant Constable Kunjam Joga and Sainik Bhima. So these are the updates that we have got, and it's a very tragic news coming in as well at this point of time, viewers, where we're learning that 3 DRG officials have lost their lives during the encounter between security forces and Naxals in the district Sukma. Deceased include ASI Ramuram Nag, Assistant Constable Kunjam Joga and Sainik Bhima. So these are the updates that we have got, and it's a very tragic news coming in as well at this point of time, viewers, where we're learning that 3 DRG officials have lost their lives during the encounter between security forces and Naxals in the district Sukma.
These 3 cops were killed in an encounter, and the deceased are ASI Ramu Ramnag, Assistant Constable Kunjam Joga, and Sainik Bhima. Let's go straight to Satyavijay is joining us live right now. A very unfortunate news coming in right now. Satyavijay, 3 cops losing their lives in this encounter. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा एक कह सकते हैं नक्सलियों ने अटैक किया है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में चूंकि ये मुठभेड़ सर्चिंग के दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने की है, जिसमें कि 3 DRG जवान, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये जो जवान होते हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती किया होता है, ये लोग सर्चिंग कर रहे थे और इसी सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें कि 3 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। इसके बाद भी नक्सलियों को इस चीज का डर नहीं है। भूपेश बघेल गवर्नमेंट वहां पर है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसके बाद भी वहां पर कांग्रेस अधिवेशन भी है। दूसरी तरफ नक्सली अपनी इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें 3 जवान शहीद हो जाते हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाका है, जहां पर DRG के जवान जो है वो सर्चिंग के लिए निकले थे और इसी दौरान नक्सलियों ने उनके साथ उन पर फायरिंग की, अटैक किया, जिसमें तीनों जवानों को गोलियां लगी हैं, जिसमें ASI एक हैं, इसके अलावा असिस्टेंट कांस्टेबल है और एक सैनिक हैं। ये 3 जो जवान हैं ये शहीद हो गए हैं। इसके अलावा ये भी इनपुट्स हैं कि कुछ और जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो पूरी जानकारी अभी वहां से निकलकर सामने धीरे धीरे आ रही, चूंकि जंगल इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें ये 3 जवान शहीद हुए हैं। तो अब वहाँ नेटवर्क का इशू, इसलिए वहां से और ज्यादा इनपुट्स निकलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। घना जंगल है, यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, लेकिन लगातार नक्सली इस तरह से वहां पर जवानों को टारगेट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। Right, Satyavijay, thank you for joining us with all the details. So, Satyavijay getting us top updates. Encountering in Sukma, 3 cops have been martyred in that encounter with Naxals. All right, viewers, let's go ahead to the other story we're tracking as well right now. This Saturday, a short while ago, we saw a showdown in the UP Assembly. The Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath hit out at the opposition in the Assembly. Addressing the Assembly, he makes his anti-mafia stand very clear, and he's also said and hit out at the opposition, saying that the kind of mafia raj which runs in UP that has to be handled. He has made a couple of points on that as well. Let's go ahead and hear what the UP CM had to say on the floor of the Assembly. मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है, अपराधी को भी दूर कर, अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय
We're getting visuals right now of the German Chancellor who is in Delhi, and he's meeting the Prime Minister right now. Those visuals coming in of the German Chancellor, Olaf Scholz, meeting the Prime Minister Modi, and many details and many key issues are to be discussed in this meet. He has arrived in New Delhi, has met the Prime Minister, and we believe a couple of key issues will be discussed there. Couple of key issues such as bilateral ties, the Ukraine war, among others, viewers. So we're getting these updates coming in of the Prime Minister meeting the German Chancellor. And it's a very important visit because it's the first visit of the German Chancellor Scholz after he became the German Chancellor of Germany. So it's his first visit. He arrived in India on a 2-day visit that in fact is expected to further expand the overall bilateral relations. A number of key areas including new technologies, clean energy, trade and investment. And the Prime Minister and Scholz are holding a wide range of talks that will cover the Ukraine conflict, situation in the Indo-Pacific region and ways to boost bilateral ties. It's a first visit of Scholz after he became the German Chancellor in December 2021 following Angela Merkel's historic 16-year tenure at the top post. All right. So now we also believe that Modi and Scholz are holding bilateral talks, and those visuals coming in as we speak right now. Where the Prime Minister Modi has met the German Chancellor, and they have been meeting in the past few years as well. Last year, they met on the sidelines of the G20 summit. But the first meeting between the two leaders had taken place during Modi's visit to Berlin on May 2nd last year for the 6th India-Germany Intergovernmental Consultations, or the IGC. And Scholz has also invited the Prime Minister for the G7 summit under the German presidency. The ties between India and Germany have been on the upswing in a range of key issues in the last few years. And Scholz will be leaving for Bengaluru on Sunday morning, that's tomorrow. And he will depart from Bengaluru at around 5:30 p.m. tomorrow. So it's a 2-day visit of the German Chancellor, who has arrived in India for a 2-day visit. It's just a 2-day visit. Right now, visuals coming in of the Prime Minister meeting the German Chancellor. Let's go ahead to our senior executive editor, Abhishek Kapoor, is joining us. Abhishek, we can see that the bilateral meeting is underway as we speak. Well, yes. So this is called intergovernmental consultation. That's the mechanism between India and Germany. Germany happens to be our biggest trading partner in the European Union and also in the global top 10. So that really underscores the importance of this dialogue that's happening between the two sides. This is an institutionalized mechanism where top leaderships of both the nations meet. Prime Minister Modi had traveled to Berlin last year, and this mechanism has been in place since 2011. And it's whole of the government approach, and that's why you would see these are not like just Prime Minister meeting the President or Chancellor in this case, but Chancellor Scholz is accompanied by top levels of his administration, like Prime Minister had taken along with him Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, and National Security Advisor Ajit Doval. These talks gain really significant because they are happening on the first anniversary of the Russia-Ukraine war, and Germany in many ways has taken it on its face, on its chin, as to say, and paid a price indirectly, in the sense that Germany depended a great deal on Russian energy supplies, and those have got disrupted. So, like the rest of the world, Germany also in many ways suffering from the vagaries of the war, and that's why the stakes high in terms of seeing a winding down of the war in some ways. And remember, just last week, Chancellor Scholz, while participating in the Munich Security Dialogue, had quoted Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, and said that
it's Europe's problem, it's not the world's problem, and Europe should be taking a little more responsibility. So you can expect that conversation happens on that side. Chancellor Scholz also happens to be one of the very few, or maybe one or two Western leaders who have traveled to Beijing since the war started last year in Europe. So in that sense, there can be some coming together or understanding of China as well, and what China doing with the global supply chains. For example, Germany also brought out an Indo-Pacific paper or security position, and since then there has been an uptick in the German defense budget. So you can expect that there would be some component of the dialogue taking place on making our defense partnership a little stronger, not just in the Indo-Pacific. Otherwise, also Germany is known for its engineering skills, and climate change is another aspect connected with the disruption in global fuel supply chains. So there is in fact a green and sustainable development partnership that was launched last year when Prime Minister had traveled to Germany, and also a measure of the kind of engagement that's taking place, that the two leaders met twice last year on the sidelines of G20 and G7, and then of course the bilateral, and now again this year, apart from this meeting that's taking place now, they would again be coming together and having one more bilateral meeting on the sidelines when the G20 Leaders Summit happens this time in New Delhi in the month of September. So significant development there, and of course goes without saying that shows to the world the importance of India, the importance of engaging with India if you are looking for answers to all these problems that are ailing the world, its economy, trade, and climate change, among others. Right, Abhishek. And we know that clean energy is one of the top areas that we can expect a lot of talk on, because earlier we have seen that a lot of commitments being made between the two countries for clean energy, green hydrogen. These are very big areas that both the countries will be speaking on, Abhishek. Well, absolutely. And that's it's in that context that I was talking about the Green Sustainable Partnership that has been launched by the two sides, Shivangi. And there is, within the larger framework of a very strong economic partnership, the Green Partnership is a very substantial component, is going to be a substantial component. And Germany has, for example, allocated about 10 billion euros by way of commitments insofar as development cooperation portfolio in India is concerned. That's a big sum at 10 billion euros, and this is going to go. This is going to go for looking at clean energy, climate change technologies, and emerging technologies, for example. And to that extent, the cooperation is going to be significant. Remember, in the budget this year, there has been an extra focus on green energy, on hydrogen as a fuel, and you can expect that there will be some coming together between India and Germany on those aspects to make sure that alternative supply lines, insofar as fuel chains go, they are established, and newer technologies see infusion of funds and research and collaboration between the two sides. And that's why Chancellor Scholz's visit to Bengaluru tomorrow gains even more significance, because he's spending the day in Delhi and then travels to Bengaluru and engages with India's IT and science sector, and that's going to be important for all the things that are on the table when it comes to that green and sustainable development partnership. Right. Thank you, Abhishek Kapoor, our senior executive editor, helping us understand what's happening there, because we are seeing that the Prime Minister and the German Chancellor are holding a wide range of talks as we speak. And the big focus would, of course, be on strengthening bilateral ties between the two nations. Okay, viewers, let's go ahead to some other developments that we're tracking right now. We're getting some breaking updates. DMK MLA Udaya Suryan, while campaigning in Erode East, was found asking on mic whether money has been received by voters or not. The video of him speaking has now surfaced. In the video, he's seen asking, did they, that means party men, meet you in the last 2 days? Are you all happy?
They will again visit you after voting. Did they give? So viewers, that is the development we're getting right now with the DMK MLA Udaya Suryan while campaigning in Erode East. West was in fact seen saying this on mic. Let's go ahead and play out exactly the statement by the controversial video which has emerged. அனைவருக்கும் வணக்கம். 2 நாளா நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தாங்களா? வரலங்களா பார்த்தாங்களா? மகிழ்ச்சியா இருக்கமா? அப்புறம் இன்னொன்னு பார்த்திருப்பாங்க. ஓட்டு போட்ட நீங்க மறுநாள் பார்க்கிறதுக்கு. கொடுத்தாங்களா? நிறைய பேர் பேச. So, ahead of the Erode by-polls, viewers, a big controversial video has emerged. It's a DMK video where DMK MLA Udaya Suryan, while campaigning in Erode East, was found asking on mic whether money has been received by voters or not. ध्वस्त हो गई है हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, ये लाल टैंक से जो लौ उठी है और उसमें पूरा बिहार धड़क रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टैंक की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से उन्हें सिखाएंगे। मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना हो करो, परंतु ये जो लट्ठा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? मित्रों, इस क्षेत्र की, मैं नेपाल के सीमाओं पर क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जाए। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम ये जनसांख्यिकी बदलने का काम अंगद के पैर की तरह रोक लेंगे, कोई नहीं रोक पाए। माताओं, भाइयों, बहनों, 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट बेतिया से पकनाहा तमकुही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर फुलिया घाट के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा? उनकी भूमि नहीं मिली। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात कर रहा हूं और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आपने पूछेंगे, जरा जोर से वो पूछेंगे नीतीश बाबू को। मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के तहत लिया। अब यहां पर पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में 80,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। मित्रों, नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, जिससे व्यापार बढ़ने वाला है। पश्चिमी चंपारण के सांसद श्री संजय जायसवाल के प्रयासों से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस नौतन से होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगौली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थारू जनजाति, अभी थारू जनजाति के बरना उत्सव को मोदी जी ने मन की बात में उठाकर हमारे थारू भाइयों बहनों को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देने का काम कर उनका सम्मान किया। लगभग इस जिले में और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। Right, so Amit Shah's address in Bihar, there in Champaran, where he is making many points, especially talking about the fact that the BJP will end the jungle raj in Bihar. He's attacking Nitish as well. Remember that a lot of details and developments have come back from Bihar, where there has been an issue of law and order situation. So Amit Shah in Bihar addressing a rally. मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे।
11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान लाल। Mr. 1 million से the question of Republic TV पुलिस वालों को पीटा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान लाल। Mr. 1 million से the question of Republic TV पुलिस वालों को पीटा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the
non-Soros media. Non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor. We have no money. The mainstream media has money. We are broke. Help us. Please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? का विरोध करती थी, थे तो हमारे साथ, मगर धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है मित्रों, कंकर चलाने की हिम्मत। और मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिम चंपारण वालों, बताओ 24 में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे ऐसा आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए, 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जंगल राज लाए हैं उनको सत्ता के बाहर करेंगे, पक्का करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और जंगल राज वालों को निकालने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Amit Shah's address in Bihar. We just heard his address where he hit out at Nitish, and he also spoke about the law and order situation in the state of Bihar. All right, viewers. So as we can see that Shah takes on the Nitish government and has attacked Nitish on the Prime Minister ambition that had come out. In fact, there was a development where we got to know that Nitish wants to project himself as a Prime Ministerial candidate. At this point of time, viewers, Shah's words have been about attacking the law and order situation in Bihar. Also, he spoke about how Nitish Kumar is not taking care of the people and the welfare of the people. Also spoke about how BJP can come in with and make sure that the state develops fast. He spoke about development as well, and a couple of details coming in from Amit Shah's speech there, the rally, the address that he has made. He also spoke about the need to remove Jungle Raj from Bihar. So multiple updates coming in at this point of time, viewers, where Amit Shah has said that Nitish Kumar is nursing dreams of becoming a Prime Minister every 3 years, and also speaking about how Nitish is more involved with his Prime Minister ambition than taking care of the people of Bihar. So very, very strong words coming out at this point of time, viewers, and also spoke about how India has taken on Pakistan, how Prime Minister Modi
has taken on Pakistan and given Pakistan a befitting reply. So many details in that speech of Amit Shah that we just heard. And also we are getting to learn that Amit Shah saying that the people of Bihar, they want the Prime Minister Modi. And this is coming in after Nitish Kumar had declared his PM ambitions. Remember that this was a big story that we had tracked here on Republic TV, where he had said that he would like to, in fact, that's a news that we had got, that there was a lot of news coming in that he would like to be seen as a PM candidate. Earlier, the Home Minister Amit Shah had claimed that Bihar CM Nitish Kumar had no principle and he backstabbed the BJP to join hands with the RJD chief to pursue his prime ministerial ambitions. Okay, we're being joined right now by a guest. We are Chittaranjan Gagan of the RJD is joining us. I just want to come across to you because the Home Minister has made very pointed attack. He has said very clearly that Nitish Kumar, and he said this again and again in the past as well, that he backstabbed the BJP and just to get closer to his prime ministerial ambitions. देखिए, नीतीश जी ने कभी नहीं कहा कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब दूसरे लोग कह रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मेरा मिशन है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना। कि भाजपा का जो राजनीतिक चैत रहा है, जो लोग भाजपा के साथ रहे, उसके घर में घुसकर और जो है सो जयचंद को पैदा कर उसको कमजोर करना, उसको तोड़ना, और इसका उदाहरण महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल और बिहार में जनता दल यू। वो तो नीतीश जी उनके चाल को समझ लिए और जिस ढंग की परिस्थिति देश में पैदा की जा रही है भाजपा के द्वारा, तो नीतीश जी एक समाजवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, समाजवादी परिवार की उपज हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब भी मौका आया उन्होंने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे का विरोध किया था और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि आज देश को बचाने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए भाजपा को इस केंद्र की सत्ता से हटाना जरूरी है और इसी मिशन को लेकर वे बिहार में महागठबंधन में शामिल हुए हैं। कभी भी उनके द्वारा यह नहीं कहा गया कि हम प्रधानमंत्री के हम उम्मीदवार हैं। इतना जरूर है कि इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव नीतीश जी को है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए एक बेहतर व्यक्ति साबित हो सकते हैं। लोगों की इच्छा है, बिहार के लोगों की इच्छा है कि हाँ नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, हम लोगों की इच्छा है, लेकिन नीतीश जी ने कभी यह प्रकट नहीं किया है। Right. Well, thank you, Chittaranjan ji, RJD spokesperson, for joining us. I'm also being joined right now by Neeraj Kumar of the GADU. Thank you for joining us here. बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो अमित शाह हैं उन्होंने बहुत पॉइंटेड अटैक किया है, उन्होंने बोला है कि नंबर वन थिंग ही सेड कि नीतीश कुमार हैज बैकस्टैब बीजेपी, धोखा दिया बीजेपी को। सेकंड थिंग उन्होंने बोला है कि जंगल राज है बिहार में। टू थिंग्स ही हैज सेड मिस्टर कुमार। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद 23 माह 23 मंथ्स 11 डेज के बाद अमित शाह जी ने बिहार की जनता को धोखा देकर के नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ली। क्योंकि जंगल राज बिहार में है, इसके आधार पर उन्होंने वोट मांगा था, सत्ता नहीं मिली। डीएनए के नीतीश कुमार का और बिहार का खराब है, ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने, और 23 महीना आफ्टर 23 मंथ्स 11 डेज बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। पहला सवाल, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा सवाल उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिहार में जो उन्होंने कहा था कि जो आतंकी घटना में लोग मारे गए थे गांधी मैदान के, जिसके बाद बीजेपी सत्ता में आई थी, 14 से लेकर अभी तक 23 तक के उन 6 परिवार को नौकरी नहीं दे पाई है। ये सच्चाई है। इसके अलावा उनको यह बताना चाहिए था कि चंपारण के इलाके में जो किसानों का
इलाका है। जो आपने घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि पेंशन की सुविधा हम देंगे, अब तक के क्यों नहीं दिया है? किसानों को क्या आपने दिया ये बताते आप यह बताते कि हमने विकास के कौन कौन से मापदंड स्थापित किए। आप बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज के कह रहे हैं कि हम खोले, मैं सुन रहा था। ITI कह रहे हैं कि हम खोले। भैया आपका क्या योगदान है इसमें? और अनुसूचित जनजाति के थारू समुदाय के लिए महिला पुलिस बटालियन बना, इसमें आपका क्या योगदान है? पर्यटन के क्षेत्र में जो उसके आधारभूत संरचना का विकास हुआ, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? इसलिए जुमलेबाजी नहीं, सच को बोलिए। और आपने यह कहा कि जंगल राज आ गया है, वही चंपारण का इलाका है ना, जहाँ दस्युओं का आतंक चलता था। आज हिम्मत किसी का है कि वो उस ढंग की परिस्थिति पैदा कर दे? इसलिए राजनैतिक FIR करते हो। नीतीश कुमार जब तक है तब तक बिहार में बीजेपी को सत्ता नसीब नहीं होने वाला। जी। Thank you, Neeraj Kumar of the JDU. That was Neeraj Kumar of the JDU joining us there on Republic TV after Amit Shah has made a very pointed attack at Nitish Kumar and the government there, saying that Nitish Kumar is nursing PM ambitions and he does not care about the welfare of the people. All right, let's move ahead to the other breaking update we're getting for you right now. We're getting back-to-back updates here on Republic TV. Okay, we're learning that Vadra Aid is praising Yogi Adityanath and is singing Yogi's praise. Well, that's the breaking news we're getting for you right now. Back-to-back updates coming in. Priyanka Vadra Aid has praised Yogi Adityanath. He has tweeted, political opposition have their place, but power for faith cannot be compromised. Today in the Legislative Assembly for UP, I am with CM for taking the side of Shri Ramcharitmanas and slamming the leaders who insulted the Ramayan. I appreciate Yogi. Let's go ahead to our executive editor Aishwarya Kapoor, who's joining us. So we're seeing that the Priyanka Vadra Aid has praised Yogi Adityanath. Aishwarya? Well, that's right. Yes, absolutely, Shivani. At this point of time, you have Acharya Pramod Krishnan, aide and a political advisor of Priyanka Gandhi Vadra, coming out and hitting the social networking sites, praising Yogi Adityanath for whatever reasons it may be. He says that quoting of Ramcharitmanas and then so on. But the point is that now you have senior Congress leaders praising UP Chief Minister Yogi Adityanath. So it's a very embarrassing situation for the Congress party when there is a complete directionlessness, when there is no clarity within the party and no democracy now, because what has happened is, and you're going to see more and more of this, that even the democracy has been taken from the inner quarters of the Congress. The CWC is now going to be nominated and not elected. Hence, this has created a sense of frustration furthermore within the Congress party to the likes of Sachin Pilot, Dig, Vijay Singh, Acharya Pramod Krishnan. None of these leaders can now even contest. It is only, there is no democracy left within the Congress party, and this is something which is really frustrating them. And in turn, now you see Acharya Pramod Krishnan coming out and then praising Yogi Adityanath, embarrassing the Congress party to the core. Yes, he has stated the facts. He has stated the very reality. But the point is that there is a combustion happening. There is an internal combustion happening within the Congress party, because after the whole so-called Bharat Jodo Yatra, the whole perception was being made that all is okay and Rahul is the undisputed leader within the Congress party. But the reality is that there are still leaders who have mass support. There are still leaders who are still taking the Congress party ahead, and they are being kept away from the leadership of the Congress party. Now there is no democracy in the Congress party, and you will see such spurts of anger, such sudden reaction from these senior leaders who have been in the Congress party for a long, long time now. And at this point of time, we are talking about Acharya Pramod Krishnan hitting out, basically in an indirect way, praising Yogi Adityanath, and it's on the face for the Gandhis and the Vadras who are right now at the helm of affairs of the Congress party. Back to you. Right. So we're getting these top updates right now where we are learning that Priyanka Vadra Aid has praised Yogi Adityanath. Today, Aishwarya,
Yogi Adityanath, and earlier also he has said on the Ramcharitmanas issue that the Ramcharitmanas issue has been raised by those who wanted to spoil the atmosphere in the society and derail the development agenda of the state government. So today in the assembly, Aishwarya, very, very strong points had come in from Yogi Adityanath. Her Excellency, चांसलर सोच, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, गुटन टाग, नमस्कार। मैं मेरे मित्र चांसलर सोल्स और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर सोल्स कई वर्षों बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। 2012 में उनकी भारत यात्रा हैम्बर्ग के किसी भी मेयर की पहली भारत यात्रा थी। स्पष्ट है कि उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों की संभावनाओं को बहुत पहले ही समझ लिया था। पिछले वर्ष हमारी 3 बैठकें हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दूरदृष्टि और विजन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। इन अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। चांसलर सोच के साथ आज आया हुआ बिजनेस डेलीगेशन और भारतीय बिजनेस लीडर्स के बीच एक सफल बैठक हुई और कुछ अच्छे एग्रीमेंट भी, बड़े महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक, आईटी, टेलीकॉम और सप्लाई चेन्स के डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर हमें दोनों देशों के प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स के उपयोगी विचार और सुझाव भी सुनने को मिले। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे ये संबंध और भी गहरे होंगे। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने संबंधों में नए और आधुनिक पहलू भी जोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष मेरी जर्मनी की यात्रा के दौरान हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की घोषणा की थी
इसके माध्यम से हम क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी हमने साथ काम करने का निर्णय किया। फ्रेंड, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इस क्षेत्र में हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। भारत की G20 की अध्यक्षता में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। हमने इस बात पर भी सहमति दोहराई कि वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए G4 के अंतर्गत हमारी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है। एक्सेलेंसी, सभी देशवासियों की तरफ से मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। इस वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित G20 समिट के लिए हमें आपका फिर से स्वागत करने का अवसर मिलेगा। आपके इस भारत यात्रा और आज की हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I call upon the Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, His Excellency Mr. Olaf Scholz, to make his remarks. Sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, vielen Dank für die herzliche Begrüßung in Neu-Delhi und ich freue mich, zum Staatsbesuch hier in Indien zu sein. Es ist schon gesagt worden, es ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin, sondern ein zweites Mal. Ich war hier als Bürgermeister der Stadt Hamburg und ich kann rückblickend sagen, es hat sich viel verändert. Indien hat einen großen Aufschwung genommen, es ist viel Fortschritt passiert und das ist ein gutes Zeichen auch für die Beziehungen und die Zusammenarbeit. For all the goals and objectives we've set ourselves, indeed, we are convinced, as the Prime Minister said, that both our countries are closely linked because we have similar ideas and believe in democracy, and it's important for the future of our lives. Thus, it is important for us to use these opportunities to address the challenges ahead of us and to make sure that in a whole host of areas, economic, cultural and others, we further deepen and expand our relationship. And that is exactly the purpose of my visit to India. Wir haben zusammengearbeitet und we have been cooperating. We have been discussing matters. This has made it possible for us to take important decisions last year when it was necessary. For example, when it was about the G20 taking decisions together. And I'm pleased that India has the presidency of the G20 this year. A very responsible task at a difficult point in time that has to be underlined. Indien diese Aufgabe auch But I'm confident that India will was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben. fully comply with what needs to be done in that regard. A very important question is securing the supply with food and energy. We have to make sure that countries in Asia, Africa and America
are not too strongly and negatively impacted by the terrible war of aggression that Russia started against Ukraine, and that the impact is not too negative for them. Supply shortages is thus one priority of our work. Indeed, the war began in Ukraine began a year ago. It has led to immense losses, destruction, destroyed infrastructure, railway links, energy connections, grids. It is a major catastrophe, but above all, it is a disaster, a catastrophe, because we know that this war violates a fundamental principle to which we had all been agreed for such a long time, and that is that you do not change borders through the use of violence, but that international law governs international relations and ought to provide the basis for international actions. Thus, it is important that in the United Nations too, we time and again state very clearly where we stand on this subject matter. Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान लाल। Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle. Hello and welcome viewers. It's a newsy Saturday afternoon. I'm Ankit Prasad and we're tracking a number of stories. We've just seen the German Chancellor with PM Modi, both of them making a joint statement. It's G20 season. The big leaders are about to start coming in. There's already a finance minister and central bank governors meeting going on. The Italian Prime Minister is likely to be following the German Chancellor's footsteps. And there is a lot else besides that's going on. We'll tell you all about it in this bulletin. Let's start off with the headlines.
A day after the violent face-off in MCD House, BJP releases videos claiming Aam Aadmi Party incited the violence. Vadra Congress continues with abuse politics, now wishes for PM's death. AIMIM opposes the name change of Aurangabad to Sambhaji Nagar, calls it communal. Yogi comes down hard on the Samajwadi Party over Mafia Raj as a face-off erupts over the Prayagraj murder. German Chancellor Olaf Scholz on a two-day India visit. Prime Minister and Scholz give a joint statement. RRR wins 4 trophies at the HCA Film Awards, including Best International Film. Viewers, just a short while ago, you watched Amit Shah, the Home Minister in Champaran, Bihar, taking on the Mahagathbandhan of Nitish Kumar and Lalu Yadav. And entailed in Amit Shah's very aggressive, very attacking speech was a direct jibe at Nitish Kumar, claiming that Nitish Kumar has his eyes firmly set on the Prime Minister's chair and he is not able to provide law and order to Bihar, which is witnessing the resurgence of Jungle Raj once again. Let's listen in to what Amit Shah had to say about his once ally, now opponent, Nitish Kumar. मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ देते, परंतु नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा? उनकी भूमि नहीं मिली। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। And so you just heard there what Amit Shah had to say about Nitish Kumar. Nitish Kumar is a person who is, every third sentence you hear about him would be that he has prime ministerial ambitions, but every second statement would likely be that he does what it takes to remain Chief Minister of Bihar. However, there has been a lot of chatter regarding this. There has been a leader of the RJD who came out recently and he claimed that very shortly it will be Tejasvi Yadav who will become the Chief Minister of Bihar, while Nitish will eye holding a larger role in the national scheme of things. The person who knows this best is my senior colleague Prakash Singh, who joins us now. Prakash, does Nitish have PM aspirations? Does the RJD want to make Tejasvi the Chief Minister? Is Amit Shah right, or is Amit Shah totally off the mark? What's your opinion? Well, yes, Nitish Kumar does have prime ministerial ambitions, but there are no takers as of now, and he's already indirectly hinted to the Congress party that a meeting of the opposition party should be convened as soon as possible. But after the Bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi has emerged as a serious contender for the PM candidate as far as the opposition party is concerned, and with the recent flip-flop of Nitish Kumar changing sides quite frequently, as far as the perception is concerned, he's lost on that count. And it's a mega political event today in Bihar. On one side, Amit Shah is holding a rally because he's promised that every month
some BJP top leader will be visiting Bihar and the rally will be organized, keeping in mind the fact that Bihar is a key state and the cadres need to be galvanized. And after the win in the by-elections in the assembly, the BJP cadres are upbeat. And on the other hand, the Mahagathbandhan feels that they have enough vote bank and they can consolidate it and defeat the BJP like they did in 2015. But in politics, 2 and 2 doesn't make 4. And Narendra Modi is the single rallying point as far as the backward votes in Bihar is concerned. And since he himself belongs to the backward community, so and a strong face at the pan-India level. So he has a strong backing of the constituents in India. So it looks like a difficult challenge for the Mahagathbandhan parties, specifically in Bihar and in the neighboring states as well. Back to you. But you know, Prakash, the JDU has perhaps been the party in Bihar, the major party in Bihar, that has most faced pressures, external and internal. We've seen Upendra Kushwaha not happy and frankly leaving the Nitish fold, and we also don't quite know what the future has in store for the JDU. So where is Nitish Kumar with regards to any kind of succession or retaining his party's prime of place in Bihar? What is he doing about that? As far as realignment of political forces is concerned, that will happen in the days to come for sure. And of late, Upendra Kushwaha has left the JDU. Mukesh Sahni of the VIP party has also realigned politically with the BJP. In the days to come, if Majitana Manji also joins the fold, I will not be surprised. So the realignment of political forces is being done. As far as Nitish Kumar is concerned, it's a long political career, and for the past 18 years, he's been the Chief Minister of Bihar. So obviously anti-incumbency is weighing heavily against him. So that's one major challenge. And also on the number count, these lesser MLAs, 45 in numbers in Assembly, Tejasvi Yadav is 79. And RJD desperately wants to make Tejasvi the Chief Minister as soon as possible. Absolutely. Prakash Singh there, I thank him for joining us and shedding light on all the big political developments in Bihar, which was really triggered by Amit Shah's unsparing attack in Champaran. Let's listen once again to what the Home Minister said about the Bihar Chief Minister. मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ देते, परंतु नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा? उनकी भूमि नहीं मिली। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। Viewers, now moving on to another story. Members of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the ABVP, and the Students' Federation of India, the SFI, clashed over putting up posters for the student union's elections at Hyderabad University. Several students were injured in these clashes after members of the two student groups came to blows with each other. Let's take a look at this disturbing pattern. A massive clash erupted between the ABVP and the SFI students at Hyderabad Central University. The reason behind these clashes was said to be the student union elections. ABVP alleged SFI for inflicting violence against the tribal students of ABVP. Meanwhile, the SFI alleged that the ABVP, fearing a defeat in the election, tried to attack and provoke the student community.
Several students injured themselves in the brawl. According to sources, knives were used to carry on the attacks. Around 5,300 students were eligible to vote in the elections. The Ambedkar Students Association, Dalit Students Union and SFI contested together, while ABVP, Other Backward Classes Federation and Sevalal Vidyarthi Dal formed an alliance and contested as a collective. Bureau Report, Republic TV. Viewers, we've seen how over the last few weeks the Congress, particularly Rahul Gandhi and the UP Chief Minister Yogi Adityanath have been sparring. However, while on one hand the senior Congress leader calls Yogi Adityanath a political goon, now we have the phenomenon of a Vadra Congress aide, a Priyanka Vadra aide, who has praised the Uttar Pradesh Chief Minister by tweeting, "Political opposition have their place, but power for faith cannot be compromised." Today in the Legislative Assembly of Uttar Pradesh, I am with the Chief Minister for taking the side of Sri Ramcharitramanas and slamming the leaders who insulted the Ramayana. So this is a hearkening back to the big controversy over the Ramcharitramanas. Let's listen in now to what Yogi Adityanath had to say about the Ramcharitramanas, over which even the Congress party, some in it, are praising him. कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? So that is Yogi Adityanath taking on his opponents and those who have been maligning various Hindu scriptures, sacred texts like the Ramcharitramanas, over which we saw a huge controversy, first being sparked by a leader in Bihar and then being carried forward by the Samajwadi Party and Swami Prasad Maurya, a controversial character in Uttar Pradesh politics at the moment. Also, just about 2 weeks back, Rahul Gandhi had called Yogi Adityanath a political goon, but now a key aide of the Vadra Congress, Acharya Pramod Krishnam, who, if you'll remember, contested the Lucknow Lok Sabha election on a Congress ticket in 2019 against Rajnath Singh. He had lost then. He has praised Yogi Adityanath. He says that the political opposition has its place in power, but faith cannot be compromised. I am with the CM for taking the side of the Ramcharitramanas and slamming the leaders who insulted the Ramayana. He says he appreciates Yogi. And so this is a big statement, a big admission. And in fact, Acharya Pramod Krishnam making these remarks. And now, of course, joining us on the phone line, Acharya Pramod ji, आपने योगी आदित्यनाथ के लिए काफी praise दिया है. Why this change? Acharya Pramod Krishnam, why have you chosen to speak out against essentially your party line? No, there is no change. इसको आप पार्टी लाइन और पार्टी के रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो बात कही है वो अपनी जगह मैंने अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर कही है, क्योंकि जिस तरह से रामायण का अपमान हो रहा था, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में रामायण के पन्नों को फाड़ करके जलाने का अपराध कर रहे थे, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम जो कर रहा था, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आज विधानसभा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री रामचरितमानस का पक्ष रखा और रामायण के पन्नों को फाड़ने वालों को आईना दिखाया, रामायण का अपमान करने वालों को नसीहत दी, तो उसके लिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी की सराहना की है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये राजनीतिक
पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, राजनीतिक समर्थन और विरोध का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और आस्था का विषय है। और अगर कोई विरोधी दल का नेता भी यदि सच बोलता है, यदि हमारी धार्मिक भावनाओं के आधार पर या धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना पक्ष रखता, तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। इसलिए मैंने आज योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा की है। जी, I mean, that's good to know, Acharya Pramod Krishnam ji, that you have this view and you have held this view. Does your party agree with you? But because one would say that this whole issue was started by an RJD politician and the Congress hierarchy has maintained until you a silence on the matter. देखिए, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है या क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बताएंगे और कांग्रेस पार्टी का फैसला बताएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सराहना की है और मैं मानता हूं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हमारी श्रद्धा के आधार ग्रंथ के पन्ने फाड़े जाएं। रामायण के पन्ने फाड़ने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है, रामायण को जलाने का नाम धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो ये तमाम सेकुलर नेताओं को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये कतई नहीं होता है, ना कतई माना जा सकता है कि एक धर्म की भावनाओं को आहत किया जाए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाए। अगर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता तो महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये क्यों गाते? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता तो भारत के संविधान निर्माता भारत के संविधान के मुख्य पृष्ठों पर श्री राम दरबार के चित्र अंकित क्यों करते? मैं ऐसा मानता हूं कि रामायण का अपमान जिन्होंने किया है वो घोर पाप किया है और मैं मांग करता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से कि वो ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करें। और मैं आज विधानसभा में जो मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है जिसमें रामचरितमानस को का पक्ष रखा है, जो नेता रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ कर रहे थे उन्हें उनके भावार्थ को समझाने का प्रयास किया है, उनका प्रयास सराहनीय है। राजनीतिक विरोध और समर्थन अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा पर सत्ता के लिए समझौता नहीं करते। Absolutely. Acharya Pramod Krishnam, I appreciate you joining us and being so forthright in your views. The Congress party, you're saying, will take its own stand via its spokespersons, but you are calling for respect to all faiths. That's a big statement there from Acharya Pramod Krishnam. Let's move on for the moment, viewers, to other news. Let's see what's happening across the country now. Bihar Minister Surendra Prasad Yadav was seen on the back foot over his extremely offensive and distasteful remark against the Indian Army after the opposition created a huge uproar demanding his resignation. Yadav called himself a nationalist and said that he cannot insult the forces. The ruling Grand Alliance in Bihar consists of several parties including the Rashtriya Janata Dal, JDU, Congress and other left parties, but Rahul Gandhi's absence from rally posters has raised eyebrows in the political space. Bihar Congress Committee called a meeting immediately after which his picture on the event picture was reinstated. And a lot more news coming up. A day after the violent face-off in Delhi's MCD house, BJP releases videos claiming Aam Aadmi Party incited it. And the Vadra Congress persists with its abuse politics, now wishes for PM's death. We'll tell you about this after a short break. Stay with us. खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान मान मिसमान मिलियंस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ रिपब्लिक टीवी पुलिस वालों को पीटा
कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Look at the big international stories now. The death toll in the devastating earthquake that struck southern Turkey and neighboring Syria on February the 6th has now crossed the 50,000 mark. While Turkey's Disaster and Emergency Management Authority reported 44,218 deaths in all on Friday night, Syria announced the death toll on its side at 5,914, taking the combined toll above 50,000. Pentagon Press Secretary, U.S. Brigadier General Pat Ryder said that the U.S. and India enjoy a good partnership and that America is looking forward to continuing to develop its relationship with the Indian military. And we'll tell you all about the big stories, particularly about Yogi Adityanath coming down hard on the SP over Mafia Raj as a massive face-off erupts over the Prayagraj murder. All that and more in just a few seconds. Stay with us. खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान लाल? Mr. One will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है।
Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान मान। मिस्टर मान, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Pakistan has faced a series of martial laws, 4 military dictators, and the constitution held in abeyance multiple times. And even when the military dictators are not there directly in power, they are the puppeteers behind the throne and they control people. ये story क्या है? पाकिस्तान की जो जनता है, उनको डेमोक्रेसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस्लाम चाहिए। कहने को बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इमरान खान भी तरीके इंसाफ करते रहते हैं, सब फौज की गोद में बैठना चाहते हैं। Amit Shah slams Nitish over 2024 PM dream, says people have already chosen Modi. BJP releases videos claiming AAP incited violence on floor of house. Storm over death of a murder probe witness, Yogi hits out at those who patronized mafia. Vadra aide praises Yogi for his tough message on those maligning Ramcharitmanas. PM Modi and German Chancellor hold talks to strengthen bilateral ties. From threat letter to targeting by MVA, former governor reveals it all in an explosive interview. And the biggest story that we're tracking at this hour is about the violent scenes that we witnessed on the floor of the MCD on Friday evening. It was a brawl like never seen before. The BJP is now blaming Aam Aadmi Party
FIRs have been filed, counter FIRs have been filed. The political fight and the blame game continues. We have a reaction coming in from BJP MP Gautam Gambhir, where he's blaming Aam Aadmi Party for the violence that has taken place on the floor of the House. Let's listen in. He's alleging BJP of Gundagardi, while BJP is saying that Aam Aadmi Party councillors were instigated by Atishi. What's your take on this? It's absolutely ridiculous what has happened. I think that is something which is not the great thing, what the visuals that were coming out, which is not good for the people of Delhi as well. And that is the kind of politics which should not happen. And in fact, for me, I've always been a believer. I think Aam Aadmi Party have always tried to do something like that, and they should probably get their own house in order rather than keep blaming. First they start blaming the central government, then they start blaming the LG, then they start blaming BJP. In 8 years, they've been in power, and all they've done in last 8 years have only blamed BJP for everything. You people should talk about how many schools, colleges, hospitals have opened in last 8 years. These were the promises which were made by the CM of Delhi. You guys never ask him this question. Why don't you ask him this question? What is happening in Delhi? Imagine there is no development that has happened. There is no infrastructure development that has happened. You've seen from your own eyes the amount of problem people have from Delhi Jal Board. This is not in front of me. This is in front of you people as well. Try and show the truth to the people of Delhi, and that is what the people of Delhi want. Mr. Gambhir, I would like to show you the video of this RK. You yourself see that the entire road has collapsed. I would like to show on the camera also. The entire road has collapsed. A bike and the dog fell. There's a situation of Delhi right now. The problem of sewer, potholes, and still more than 2 months till the elections. Yeah, that's a very, very valid question. You know, when you end up giving everything for free, when you start spending everything on other states, when you have nothing left to spend on infrastructure in Delhi, and that is what we've been raising day in, day out. How much money has been put in infrastructure development in Delhi? If you don't invest in infrastructure development, these are the things that's going to happen. Because you've got no money left, you've given everything for free, this will happen. It has happened in RK Puram, it will happen in other parts of Delhi as well. That is the problem. The CM of Delhi is more interested in other states and trying to go national as compared to what he has done in Delhi, because he came in Delhi thinking that he's going to make Delhi a world-class city. This is whose responsibility. He's been in charge of Delhi for last 8 years. You should ask the same question, and you should show the same video to the CM of Delhi. So one last question of school scam, because you raised the issue of school scam. You yourself once visited to the school, the toilets, the school, the rooms which were made in the Delhi schools, the primary schools by Aam Aadmi Party government. Those were not fulfilled. There was school scam in the monetary budget as well. See, my only question to the CM of Delhi is, in last 8 years since he's been the CM of Delhi, how many new schools, colleges, hospitals, how many new flyovers have been made, how many new DTC buses have been introduced, how much has he spent on infrastructure of Delhi? The population keeps increasing every year. Unless and until you don't invest in infrastructure development, Delhi will keep collapsing, and that is so unfortunate, because ultimately only the people of Delhi have to suffer, and the CM of Delhi has no emotions for the people of Delhi. All he wants to do is concentrate on other states and use the money of Delhi to fight elections in other states. Delhi MP Gautam Gambhir, who's stating that is a very unfortunate what has happened in the MCD, in the house of MCD. He also states that the entire focus of Delhi CM is on the polls, but not on the basic infrastructure which should be given to the people of Delhi. And the CCTV footage which has come from South Delhi in RK Puram, where a collapse of the road could clearly be seen. That's the situation he's pointing out, that will be in the other parts of Delhi as well, till the time infrastructure was not made strong by the Delhi government. Along with video journalist Vivek, Harsha Chandwani reporting for Republic TV. देखिए, जो कुछ हुआ शर्मनाक है. हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी. महापौर पद की गरिमा होती है, उनको इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. पहले उन्होंने चुनाव रोकने की कोशिश की, मोबाइल फ़ोन ले जाने की बात की. जब हम कोर्ट चले गए तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि मोबाइल नहीं जाएगा. पूरी वोटिंग हो गई, उनको कोई नाराज़गी नहीं थी. आराम से वोटिंग हो गई, सब लोगों ने मतदान कर दिया, काम ख़त्म. टेक्निकल एक्सपर्ट इलेक्शन कमीशन ने भेजे, वो अंदर थे. काउंटिंग में इनके एजेंट बैठे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे. काउंटिंग हो गई, एक भी इनके काउंटिंग एजेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया. सारे वोट गिन लिए गए, वैलिड बता दिए गए. उसके बाद जब रिज़ल्ट बना तो ये वो रिज़ल्ट है जो टेक्निकल एक्सपर्ट ने बनाया है. सरकारी कागज़ है, उसकी फ़ोटोकॉपी है. उसमें वो लिख रहे हैं मेयर को कि ये रिज़ल्ट है और आपको ये रिज़ल्ट अनाउंस करना है. यहाँ से शैली ओबराय अपना खेल शुरू करती हैं. उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं
और उसके बाद वो कहती हैं कि एक बैलेट उठा के कि ये बैलेट तो रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा भाई? लोकतंत्र है, कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद वो रिजल्ट बदलने की कोशिश करती हैं, जिसका हमारे पार्टी ने विरोध किया, पार्षदों ने विरोध किया। और जब वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे तो वो भी उनसे नहीं देखा गया और उनके बड़े नेता अपने पार्षदों को उकसाते हैं और उनको प्रोवोक करते हैं कि जाके बदतमीजी करो, और उसके बाद वो हिंसा शुरू होती है, जिसकी हम निंदा करते हैं। And from Delhi, moving on to Uttar Pradesh, where there was a high battle, in fact, high decibel political fight in the assembly. Uttar Pradesh Chief Minister has hit out at the opposition, especially the Samajwadi Party in UP Assembly, saying, and in fact saying that SP is the one that has been patronizing mafias for so many years. He was making this comment as there was a huge uproar in the assembly over the murder of the key witness in the 2005 BSP MLA murder case. Let's listen in to what Yogi Adityanath said. मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी दूर का अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। आज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलाहाबाद में जो घटना हुई है, मुख्य गवाह अधिवक्ता उसकी खुलेआम हत्या होना, खुलेआम लोगों ने शूटिंग देखी है, किस तरीके से गोलियां चली हैं, अपराधी पीछे भाग करके गोली मारने पहुंचे और बम चले हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं, क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? बम चलना क्या जीरो टॉलरेंस है? मुख्य गवाह की हत्या हो जाना, वो अधिवक्ता है, उसको जीरो टॉलरेंस है क्या? और जो सुरक्षा में लगे थे उनकी भी जान चले जाना, बच सकते थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जो इलाज नहीं मिलना, ये है उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस मॉडल। ये है राम राज्य, जहां खुलेआम तमंचे चल रहे हों, बंदूकें चल रही हों, बम चल रहे हों, धुआं उड़ रहा हो और सब रिकॉर्डेड हो, और मुख्यमंत्री ज्ञान देंगे विकास का। उम्मीद करते हैं कि ऐसे चीज़ें सामने आए और पूरी तरीके से इंटेलिजेंस पुलिस फेलियर है और उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत ही दुखद है। इस मामले में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उच्च स्तरीय जांच हो रही है, STF लगी हुई है और शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस मामले की स्वयं हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है। इस मामले में हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उच्च स्तरीय जांच हो रही है, STF लगी हुई है और शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। दूध का दूध पानी का पानी होगा। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस मामले की स्वयं हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। Murder there becoming a big political flashpoint in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath giving a strong message that mafia culture, mafia raj won't be tolerated in his state. It's a big story that we are tracking. For now, we're moving on to other stories that are making headlines in the day.
Bihar Minister Surendra Prasad Yadav was seen on the back foot over his extremely offensive and distasteful remark against the Indian Army after the opposition created a huge uproar demanding his resignation. The ruling Grand Alliance in Bihar consists of several parties including RJD, JDU, Congress and other left parties. Rahul Gandhi's absence from the rally posters of Nitish Kumar has raised eyebrows in the political space. Bihar is bracing for some political saber-rattling as Union Home Minister addressed BJP supporters while Nitish Kumar and his deputy Tejashwi Yadav will hold a joint rally of the Mahagathbandhan shortly. Both Aam Aadmi Party and BJP have registered complaints with Delhi police following clashes between councillors in MCD. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has slammed the opposition, especially the Samajwadi Party, for patronizing mafia during their rule. Trouble has mounted for Congress leader Jairam Ramesh as Democratic Azad Party Chief Ghulam Nabi Azad has sent a legal notice to Jairam Ramesh for calling him a slave, Mir Jafar and vote cutter. German Chancellor Olaf Scholz has arrived for his two-day visit in India. He also held talks with Prime Minister Narendra Modi earlier today to strengthen bilateral ties. The US is looking forward to doing everything it can to support India's work to make its G20 presidency a success, and Secretary of State Antony Blinken will be attending a crucial meeting of the foreign ministers of the grouping next week in Delhi. Delhi government's public works department carried out a drive to demolish religious structures on a footpath in central Delhi amid tight police security. After union government approved renaming of Maharashtra's Aurangabad city as Chhatrapati Sambhaji Nagar and Osmanabad city as Dharashiv, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has slammed the government and calling it a communal decision. And we're heading into a short break. After the break, we'll get you details of Prime Minister Modi and German Chancellor's talks that were held at Hyderabad House earlier today. $11,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान मान Mr. Man, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है।
Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान। मिस्टर वन, will you answer the question of Republic TV? पुलिस वालों को पीटा। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Quick check of the global headlines. Despite pleas from Ukraine, President Biden rules out providing F-16 fighter jets to Ukraine for now. Canadian Prime Minister has announced further sanctions on Russia, aid to Ukraine on invasion anniversary. North Korea's food shortage seems to be worsening, with reports emerging of deaths due to hunger. And it's video wars and poster wars as BJP is claiming that AAP is incited violence on floor of the House.
Missaman, will you answer the question of Republic TV? Please follow go Peter. स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर बुरी तरह से हमला किया। चौथा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का चुनाव हार चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के कहने के ऊपर यहां गुंडागर्दी कर रही है। Soros, the allegedly evil Soros, has given a lot of money to a lot of people in the Indian news and especially the Indian digital news ecosystem. These people, who we will henceforth refer to as the hashtag Soros media, are therefore very rich media. The ironical part is that these completely blemished hashtag Soros media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. These unethical members of the Soros media have been completely lying and constantly lying and saying, oh, you got to pay to keep the news free. We are so poor, we have no money, the mainstream media has money, we are broke, help us, please give us 100 rupees. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? खालिस्तानी सरकार है पंजाब में, क्या खालिस्तानी सरकार है भगवान? मिसमान, will you answer the question of Republic TV? Please follow go Peter. Well, first of all, I'm not sure how many are asking. I know the mega crowd is. The right-wing Republicans are, talking about we can't do this. You find ourselves in a situation where the cost of walking away could be considerably higher than the cost of helping Ukraine maintain its independence. We know the Germans are now sending tanks in after the U.S. said it would send Abrams tanks as well. But we know President Zelensky continues to say what he really needs are F-16s. Will you send F-16s? Look, we're sending him what our seasoned military thinks he needs now. He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now that we're sending him to put him in a position to be able to make gains this spring and this summer going into the fall. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now.